Hello dear students, as you know very well that we have been doing the poem Alexander's Feast or the Power of Music. We have already completed the introduction of the poet as well as of the poem, and we also comprehended or understood the stanza 1 to 3 of this poem in our last or in our previous lecture. Now we are moving towards the stanza 4 of this poem. As you know that the poem is about Alexander's feast, Alexander the Great, who won the battle of Persia, and after having won the battle he was giving the party to his courtiers, to his warriors, and Thais, his beloved, was also sitting beside him and he was enjoying there. Timotheus was called to create pleasure through music in the court, and Timotheus was a great musician who created the music in order to arouse the different emotions in the mind of the Alexander the Great. In the first strain, Timotheus sing about the birth of Alexander the Great, who was his mother. As we know, he has explained that how Jove, the god, came on the earth because of the attraction of Olympia, and it was the affairs of Olympia with Jove that Alexander the Great was born. Now we see that how the different kind of the music, different kind of the song create the different kind of emotions in the heart of the Alexander Great. So let me recite the stanza 4. Soothed with the sound the king grew vain, fought all his battles o'er again, and thrice he routed all his foes, and thrice he slew the slain. The master saw the madness rise, his glowing cheeks, his ardent eyes, and while he heaven and earth defied, changed his hand and checked his pride. So now Timotheus, the musician, the great musician, is singing about the bravery, about the battle, about the valor or boldness of Alexander, about the battles he won, about the courage and adventure he shot. So he is saying that soothed with the sound the king grew vain. So hearing or soothed by the sound, the king became very vain. The king became very proud. Why? Because he fought all his battles over again. He also routed, defeated all his foes. Foes means enemies. 3 times. Thrice means 3 times. And thrice he slew the slain. And 3 times he slew the slain. He defeated the enemy. He killed them. The master saw the madness rise. And when Timotheus seeing the appreciation, the praise, and the valor and the bravery of the King Alexander, Timotheus saw that there arose a kind of madness in the king, and his cheeks are glowing, his eyes are now ardent, आंखें भी उसकी जो है कि चमक रही थी, और while he heaven and earth defied, change, because the king great has defeated both the heaven and earth, माने पूरे आसमान और पृथ्वी को सबको हिला दिया था अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, इसलिए उसके अंदर फिर ये घमंड उसकी आंखों में जो है कि टिमोथियस ने देखा कि नाउ द किंग इज वेरी प्राउड ऑफ हिज ऑन ब्रेवरी. इसलिए ये देख करके
Timotheus changed his hand and checked his pride. In order to control the pride of the king, Timotheus changed his hand, means changed his tune, his music, his song. And then he chose a mournful muse. So he chose a mournful, sad song, muse, poetry, sad song, lyric, sad lyric, soft pity to infuse, in order to infuse the soft pity, softness, दया का भाव, दर्द का भाव, इसलिए दर्द भरा गीत जो है कि उसने शुरू कर दिया. He sung Darius great and good. Now he began to sing about Darius. Darius whom Alexander defeated. Darius was also the king of Paris. So he sang about the Darius who was very great and good, but unfortunately because of the bad luck he was defeated, he was fallen. So he fallen from his state, high state. So Darius fell from his high state, high esteem, from his high fortune. That is, he was defeated and weltering in his blood, deserted at his utmost. So he was weltered in his blood. That is, all his friends and relatives left him, who were close to him. They left when he was facing the unfortunate, he was facing the unluck. That is when he was fallen, when he was being defeated. So everyone deserted. Everyone, every closure, every relative, every soldier, every man deserted him when he needed them most. At his utmost need, मानी जब उसको आवश्यकता थी तो सबने उसका साथ छोड़ दिया. By those his former bounty fed, जिनको उसने बहुत कुछ खिलाया, जिनको उसने बहुत कुछ जो है कि सम्मान दिया, जिनको उसने तैयार किया, they all deserted him when he needed them most. तो ये कहने का मतलब है यहाँ जो है कि टिमोथियस उसके लिए जो है कि mournful sad song गा रहा है कि किस प्रकार से डेरियस का पतन हुआ जबकि वो बहुत ही ग्रेट और गुड था. इसलिए घमंड, he means to say that one should not proud too much, as he saw in the eyes of Alexander the Great. So he changed this tune. On the bare earth exposed he lies. So in this way, Darius lied on this bare earth exposed, with not a friend to close his eyes, even not with a friend who could close his eyes. माने उसके जब वो मरा, जब वो पृथ्वी पर गिरा, तो उसका एक भी मित्र नहीं था जो उसकी आंखों को क्लोज कर सके, उसके लिए वीप कर सके, रो सके. With downcast looks the joyless victor said. तो ये सुन करके अलेक्जेंडर की आंखें नम हो गई और ये गीत सुन करके, और वो नीचे देखने लगा. तो जॉयलेस विक्टर माने अब उसकी जो खुशी थी, अर्लियर ही वॉज वेरी प्राउड एंड अर्ली ही वॉज हैप्पी एंड वॉज looking at Thais and was trying to making love with her, that all things they disappeared, revolving in his orbit. So now his soul was altered, his soul changed. Now he became sad. As we saw that earlier, he was enjoying the pleasure, he was very happy, he was very proud, but because of this sad music, mournful music that Timotheus sang, his heart was changed. So the various turns of chance below, and now and then a sigh he stole. So he began to sigh now and then, रोने लग गया, लंबी सांसें लेने लग गया, और आंखों से उसके आंसू भी बहने लगे, and tears began to flow. So this is how Timotheus created the emotions in the heart of the king through the music. So we must look that this is the power of music which can reach the different kind of feelings and emotions in our heart. Now we come with the stanza 5. The mighty master smiled to see that love was in the next degree. The mighty master here means the Timotheus, the musician. Then he smiled
And then he saw that love was in the next degree. Now he began to sing about the love. That is, now he changed his tune. Now he is going to sing about love. It was but a kindred sound to me. It was a kindred sound that he moved, that he began. Because, for means here, because pity melts the mind to love. Because the sympathy, the pity, the kindness always leads the mind to love. So he changed the music from sadness to love, from unhappiness to love. Because sympathy creates love. Softly sweet in Lydian measures, soon he soothed his soul to pleasures. So, hearing that sweet music, soft music sang by Timotheus, the king Alexander Great, now his soul changed and it moves towards the pleasure, towards the love making. War he sung is toil and trouble. So Timotheus sang in his song that war is nothing, war is toil, कि ये युद्ध तो सब बेकार है राजा महाराज, ये युद्ध बेकार है, टॉयल है, ट्रबल है, ऑनर बट एन एम्प्टी बबल, कि सम्मान तो है इसमें लेकिन खाली है, एम्प्टी बबल है, बुलबुला है, पानी का बुलबुला है, खाली बुलबुला है, गुब्बारे की तरह एक दिन वो पंक्चर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. पानी का बुलबुला ट्रांजिएंट होता है, थोड़ी देर के लिए हो जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है. इसलिए तुम्हें इसका वॉर का घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें इसको जो है कि एंजॉय करना चाहिए. नेवर एंडिंग स्टिल बिगनिंग. और वॉर का देयर इज़ नो एंड ऑफ वॉर, स्टिल बिगनिंग, ऑलवेज बिगनिंग. यानी युद्ध का कोई अंत नहीं है. एक बार थोड़ा ख़त्म हुआ फिर दोबारा शुरू हो जाएगा, क्योंकि दूसरा अटैक कर देगा. देन यू हैव टू फाइट. Fighting is still and still destroying. So always fighting and always destroying others as well as you destroy yourself. If the world be worth thy winning. So पूरा संसार जीतने के बाद में भी युद्ध का कोई अंत नहीं है और तुम हमेशा जो है कि लड़ते रहोगे और ये डिस्ट्रॉय करते रहोगे. इसलिए ओ किंग थिंक, ओ थिंग. So ओ किंग प्लीज think about thing. It worth enjoying. कि now you should enjoy. Now it's your time to enjoy. To have the pleasures, because there is no end of the war, and war does not bring good things, it only destroys. All the time you are fighting. So please stop that, O Raja, O King, please stop that. And now it's time for you to enjoy. You deserve for the pleasure, because lovely Thais sits beside thee. ये सुंदर प्यारी जो थाइस है, ब्यूटीफुल साइट थाइस है, योर बिलवड है, वो आपके पास में बैठी हुई है. टेक द गुड द गॉड्स प्रोवाइड दी एंड सी. टेक दिस गुड, टेक दिस ब्यूटी, टेक दिस, इसको गिफ्ट को तुम लीजिए. दैट गॉड हैज प्रोवाइडेड यू, दैट गॉड हैज बेस्टोड यू. जो भगवान ने तुमको ये गिफ्ट दिए, इसको एंजॉय कीजिए. ईश्वर ने तुमको दिया है द ब्यूटीफुल थाइस, द ब्यूटीफुल young lady. The many rend the skies with loud applause. बहुत से लोग जो है कि बहुत आपकी प्रशंसा करते रहते हैं. So love was crowned but music won the cause. And in this way जो है कि राजा जो युद्ध की तरफ जो मतलब जो है युद्ध का एक अपने आप में फील कर रहा था, गर्व महसूस कर रहा था, फिर उसके बाद में सैड हो गया था, अब वो लव की तरफ घूम गया. इसलिए लव वॉज क्राउंड, लेकिन म्यूजिक वन द कोर. बट इट वॉज बिकॉज ऑफ द म्यूजिक दैट द लव इमोशंस वर क्रिएटेड इन द हार्ट ऑफ द किंग. सो द प्रिंस अनेबल टू कंसील हिज पेन. द प्रिंस मीन्स हियर द किंग Alexander Great. Now he was unable to conceal his pain for love. That is, he was unable to conceal his love emotions. He could not hide. He could not hide his passion for love. He melted. So he gazed on the fair. So he looked on the fair. Fair means here the beautiful thighs. So he looked at the beautiful thighs. Who caused his care? Who was looking all the time? Who was carrying the king all the time? Then looking at her,
He sighed and looked. आहें भरने लगा, फिर देखा, आहें भरा, फिर देखा, आहें भरा, फिर देखा, and sighed again, और फिर आहें भरा. So you see the repetition in every stanza. How Dryden has written, how Dryden has decorated this poem. In every stanza you will find in the ending lines the repetition of the words, repetition of the phrase, sighed and looked, sighed and looked, sighed and looked, and sighed again. So this repetition shows the stress, that is, the king was overwhelmed, the king was filled with extreme love, emotions. At length with love and wine at once oppressed, the vanquished victor, जो राजा, जो victorious king, अब यहाँ पे वो फचाड़ खा गया है, because love emotions come out, sunk upon her breast. So he sunk upon the breast of the Thais. Atarth, he began to love his beloved who was sitting beside him. So this is what the explanation of this stanza we have. You can go through the PPT. Now we come to the stanza 6. Now we strike the golden lyre again, a louder yet and yet a louder strain. Break his bands of sleep, Ashunda, and rouse him like a rattling peal of thunder. Hark, hark, the horrid sound has raised up his head, as awake from the dead, and amazed he stays up. So now again, Timotheus changed the music, changed the lyre. He strike the golden lyre again. अब पहले से ज़्यादा लाउडर, yet a louder strain, यानी और भी ज़्यादा जो है कि जोर से उसने बजाया. ब्रेक इज बैंड्स ऑफ स्लीप सुंदर, और उसने जो है कि जो राजा एक तरह से नींद में चला गया था, लव मेकिंग में चला गया था, उसको उसकी नींद को जगा दिया उसको, और उसको राउज हिम लाइक ए रैटलिंग पील्स ऑफ थंडर, जैसे कोई तूफान आता है और तूफान जैसे हमें जगाता है, उस तरह से राजा को उसने म्यूजिक के थ्रू जगा दिया, और उसको कहने लगा हार्क हार्क द हॉरिड साउंड. और हॉरिड साउंड्स, टेरिबल साउंड्स वर क्रिएटेड. राजा डर गया. हैज रेज्ड अप हिज हेड एज अवेक फ्रॉम द डेड. एकदम से राजा ने अपना सिर ऊंचा किया, क्योंकि हमने देखा प्रीवियस स्टेंजा में राजा थाइस के जो है कि उसको लव करने लगा, उसकी ब्रेस्ट पे जो है कि उसने अपना सिर रख दिया, एंड ही बिगेन लव मेकिंग देयर. तो उससे वो एकदम से जगा और उसने अपना सिर उठाया, ऐसे उठाया जैसे मानो पहले डेड था, अर्थात पहले जैसे मर गया और एकदम से उसने अपना सिर उठाया, अवेक फ्रॉम द डेड, साइलेंस से जैसे जगा. एंड अमेज्ड ही स्टेज अराउंड, और चारों तरफ देख करके वो अमेज करने लगा, भौचक्का हो गया, ये क्या हो गया, ये थंडर की आवाज़, ये तूफान की आवाज़, ये इतना जो है कि शोर शराबा और ये इतनी चेतावनी, हार्क हार्क, ये हॉरिड साउंड, टेरिबल साउंड कहाँ से आ रही है, व्हाट हैड हैपेंड. और फिर साउंड क्या आ रही है, रिवेंज रिवेंज टीमोथियस क्राइस्ट. तो टीमोथियस चिल्लाया सॉन्ग के अंदर, रिवेंज रिवेंज, सी द फ्यूरीज अराइज, कि राजा प्लीज टेक द रिवेंज बिकॉज द फ्यूरीज द एनिमीज हैव कम, द एनिमीज हैव अगेन अराइजन. सी द स्नेक्स दैट दे रियर, और सी द स्नेक्स द एनिमीज who are now rearing, who are now raising their heads, how they hiss in their hair, किस प्रकार से वो अपने बालों में जो है कि वो आ रहे हैं, and the sparkles that flash from their eyes, और उनकी आंखों से किस प्रकार से चमक आ रही है, शाइनिंग है. behold a ghastly band, और एक ghastly band को देखो जो चला आ रहा है, each a torch in his hand, और बैंड का मतलब एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जो ghastly है, मानी ड्रेडफुल है, फियरफुल है, वो चला आ रहा है, सबके हाथ में एक एक टॉर्च है. Those are Grecian ghosts, O king, these are the Grecian ghosts that in battle were slain, who were killed in the battle, and unburied remain. But they were unburied, they were not buried properly, therefore they have come out from their graves, and now they are approaching towards you, now they are going to attack upon you.
inglorious on the plain. So that is, they were inglorious, they were not glorified on the plain. Give the vengeance due to the valiant crew. So please give them the vengeance to the valiant crew. These are the brave crew. So take a vengeance. बदला लीजिए उनसे. Behold how they toss their torches on high. और ये भी देखो किस तरह से वो अपनी torches को, अपनी जो torches उनके हाथ में है, उसको वो tossing कर रहे हैं ऊपर. How they point to the Persian abodes, and how they are pointing towards the Persian abode and glittering temples of their hostile gods, as well as they are also अपने जो उनके टेम्पल्स हैं, उनके जो होस्टाइल गोड्स हैं, माने गोड्स को जिनको ढंग से मान्यता नहीं दी गई, पूजा नहीं गया, उनके टेम्पल जो बने उनकी तरफ वो जो है कि चमकते हुए जो टेम्पल्स हैं उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं. द प्रिंसेस अपलॉड विद ए फ्यूरियस जॉय. और जो प्रिंसेस हैं वो बहुत ही क्रोधित खुशी के साथ जो है कि अपलॉड कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं. एंड द किंग सीज्ड ए फ्लेम व्यू विद जील टू डिस्ट्रॉय थायस लेड द वे. सो इन दिस वे राजा ने ये सब देखा, फिर ये भी देखा. थायस लेड द वे. नाउ इन these conditions, Thais was sitting beside the king. She was leading the way. She was leading the way and she was lighting the king to his prey, to his enemy. प्रे माने शिकार की तरफ वो लाइट कर रही है, उसको रास्ता दिखा रही है. कैसे दिखा रही है? Just like another Helen fired another Troy. जैसे हेलन का जो रेफरेंस है यहाँ पे ग्रीक का, कि द वॉर ऑफ ट्रॉय वॉज हेल्ड और वो टुक प्लेस बिकॉज ऑफ द हेलन. इन द सेम वे हियर थाइस इज द कॉज ऑफ अनोदर वॉर in order to fight with the enemy. So traditionally, women who hunted men, the furious symbolizes Thais in her control of Alexander, while the snakes suggest the temptation of Eve in the Garden of Eden that led to original sin. So here Dryden's audience would have been familiar with the story of Thais tempting Alexander to burn Persepolis. So Persepolis को खत्म करने का, जो जलाने का काम अलेक्जेंडर ने किया, that was because of the Thais. Thais tempted. The war took place because of the Thais, and it was in the same way as the war of Troy was fought for the sake of Helen. So after his man's drunken looting of its riches, Thais led a procession of warriors and women to the accompaniment of the flutes and pipes, as if in a grand celebration, and convinced Alexander to hurl his torch into the city. So this is how her torch followed, and then hundreds of others, and once glorious city was destroyed. In Dryden's sword, Thais led the way. ड्राइडन का जो वर्ड हम पढ़ रहे हैं उसमें वो कह रहा है कि थाइस ने रास्ता दिखाया of the revenging king to light him to his prey, ताकि वो उसको शिकार की तरफ जा सके. And like another Helen fired. So the reference to Helen also reflects on the power of women to stir men's passions even to war. That Thais used instruments during her parade to the city also suggests that the power of music to stir passions. So it's the power of music that can stir passions, जो कि passions को जगा सकता है, helping to overcome the strengths of women. और हम देखते हैं कई बार जैसे ड्रम बजता है, कई बार हम नेशनल सॉन्ग सुनते हैं, तो हमारे अंदर जो है कि पैशंस क्रिएट होते हैं, हम जो है कि लड़ने के भाव पैदा हो जाते हैं, देश के लिए मरने मिटने के भाव पैदा हो जाते हैं. जैसे हम लव सॉन्ग सुनते हैं, तो वी ऑल्सो बिगिन टू लव, वी ऑल्सो स्टार्ट लव, दैट इज लव पैशंस ओवरवेल्म्स अस. इसी प्रकार से ये सारा है. Now the last stanza, that is the 7th stanza. I just give the brief explanation of this stanza. Thus long ago heaving bellows learned to blow while organs yet were mute. Timotheus to his breathing flute and sounding lyre could swell the soul to raise or kindles of desire. So here in this last stanza the poet is admiring the music, the song, the lyre of Timotheus. इन लॉन्ग बहुत पहले जो है कि किस प्रकार से टिमोथियस ने ये सब अपनी ब्रीदिंग फ्लूट है उसके माध्यम से, साउंडिंग लायर के माध्यम से वो जो है कि सोल जो है, हमारे हृदय हैं, उनको किस प्रकार से रेज कर सकता था, किस प्रकार से सोप डिजायर्स क्रिएट कर सकता था म्यूजिक के थ्रू. और अंत में एट लास्ट डिवाइन सिसिलिया केम, उसका म्यूजिक सुन करके डिवाइनल
Cecilia, Saint Cecilia, who is supposed to be in heaven, she came down on the earth hearing the music of Timotheus. So here the poet is appreciating the music of the Timotheus. Inventress of the local frame. So Cecilia is supposed to be the inventress of the vocal frame. She is supposed to be the इन्वेंटर, यानी जिसकी वो उसने एक नया ऑर्गन जो म्यूजिक का क्रिएट किया था सिसिलिया ने, वो नीचे जो है कि टिमोथियस का सॉन्ग सुन करके नीचे आ गई म्यूजिक सुन. द स्वीट एंथुजियास्ट फ्रॉम अ सैक्रेड स्टोर एंड लॉस द फॉर्मर नैरो बाउंड्स एंड added length to Solomon's sound with nature's mother, wit and arts unknown before. Let all Timotheus yield to the prize, or both divide the crown. He raised a mortal to the skies, she drew an angel down. तो उसने जो टिमोथियस ने क्या किया कि एक जो मॉडल मैन है, ह्यूमन बीइंग है, उसको स्काइस तक पहुंचा दिया अपने म्यूजिक के थ्रू. जबकि सेंट सिसिलिया ने क्या किया, सेंट सिसिलिया ने जब अपना ऑर्गन बजाया तो जो एंजल है हेवन से वो नीचे आ गया. तो दोनों का ये देखिए कि टिमोथियस जब गीत गाता है, जब म्यूजिक बजाता है, जब अपनी बांसुरी बजाता है, जब अपना इंस्ट्रूमेंट बजाता है, तो उसको सुनकर के व्यक्ति या ह्यूमन बीइंग है उसके पैशंस इतने चेंज हो जाते हैं कि वो इसका इस तक पहुँच जाता है. कहने का मतलब उसमें लव भी आ जाता है, उसमें सैडनेस भी आ जाती है, उसमें युद्ध लड़ने की पुनः ताकत आ जाती है, और उसमें जो है कि प्राउड भी आ जाता है. तो ये सारे जो डिफरेंट इमोशंस हैं दैट कैन बी अराउज्ड थ्रू द म्यूजिक एज टिमोथियस डिड. और इसलिए टिमोथियस हियर हैज़ बीन कंपेयर्ड विद सिसिलिया, सेंट सिसिलिया, कि उसने म्यूजिक के माध्यम से ह्यूमन बीइंग को स्काइज तक पहुंचाया, उसके इमोशंस रेज किए, पैशंस रेज किए. जबकि सेंट सिसिलिया ने जब अपना ऑर्गन, अपना इंस्ट्रूमेंट जब बजाया तो उससे देवता नीचे आ गए. सो दिस इज हाउ ड्राइडन हैज admired, appreciated the power of music through the emotions that can be created by music. So as we have where Timotheus praises the mortal Alexander, mortal Alexander is the human being, so उसको praise किया, उसके नेम को जो है हाइट्स तक पहुँचाया, रिजर्व किया, सेलिब्रेट किया इंडिविजुअल्स को. सेंट सिसिलिया का म्यूजिक इतना पावरफुल था कि उसको सुन करके जो हेवनली क्रिएचर्स हैं, माने एंजल्स हैं, they came down, they descend to the earth. So dear students, this is what from me so far this poem is concerned, and I think that this is all so far this poem, and then in our next lecture we shall meet with another new poem that has been prescribed in your syllabus. So thank you very much. See you. Bye bye.